हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बार आप लोगों ने मुझे कहा है कि आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता है। व्हेन आई पुट अप माय स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस आस्किंग मी टू डू वीडियोस फॉर यू गाइस ऑन हाउ आई डू माय ओन मेकअप। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको मेकअप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आई एम श्योर आप मेरी इस बात से ज़रूर अग्री करेंगे कि मेकअप इन टुडेज डे एंड एज इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज क्लोथ्स। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, आपको तैयार होने का शौक है, तो बिना मेकअप के आप आई डोंट थिंक आप बाहर जाते होंगे। एंड सेम इज द केस विद मी। चाहे मुझे कितनी भी देर हो जाए काम से वापस आने में, चाहे कितनी भी मैं बीमार हूँ, लेकिन इफ आई एम गोइंग आउट आई हैव टू डू मेकअप। इवन इफ इट्स नॉट अ कंप्लीट full makeup look, I do a little bit so that I look good. So today I'm just going to show you, I'm at home today in my dressing room. You guys must have seen this again on Instagram, and I'm just going to show you how I create a subtle look by using very few makeup products. So I'm going to use very few products today, and I'm going to show you how I quickly get ready for a simple evening out or a dinner party.
are all the products that I used, and you can see I've hardly used like 10-12 products. So if you're fond of makeup, if you want to learn makeup, then stop making excuses like मेरे पास makeup kit नहीं है, मेरे पास सामान नहीं है. इतना सामान सबके पास होता है. Honestly, सबसे कम makeup का सामान मेरे घर पे है, because जो भी सामान घर पे होता है, I just send it to the studio because I realize that it's going to get wasted here. So trust me guys, you can create an amazing look with very few products also. And makeup is an art, it's fun. Just keep trying, keep watching videos, keep practicing. That's how all of us learn. हम लोग कोई कहीं से सीख के नहीं पैदा होते हैं, but it's really very simple to do. And this is not a very professional look guys, it's a very simple, easy to follow makeup look which I'm sure you'll be able to copy. So if you like this video, please comment below, subscribe to my channel, and if you want to see more looks that I do on myself, then please let me know on my Instagram and Facebook. Thank you so much for watching me today guys. See you next time. Bye bye.